Let me know if you need help. Yes, sir. So, Mm-hmm. what would the third one be? Third one. Let us discuss the. What about the first one? Coordination Very isomer. good. Coordination. What about the second one? Linkage. Very good. The third one. Fourth, solvate. Fourth one is Solvate. no water कहाँ है इसमें? वाटर होना जरूरी है ना सॉल्वेट में तो. Then, mm, It will be coordination isomers only, na? how? Wait a second. No, both of these are platinum only, na? Not going to be. Only I mean, if the coordination, if we have both the coordination pairs, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही isomerism possible है, that is the coordination isomers. Now, see, in the first one, we have one platinum which is surrounded by 6 chloride ions. We don't have anything like that in the second case. Can you see that? Yes, sir. Okay, so that's why it is going to be coordination isomer. Okay. And the last one, see, the counter anionic है ना, तो उस SO4 एक बार बाहर एक बार अंदर, दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स.
Make sense? Yes, sir. Now we are going to move towards stereoisomers. Number one. Now, stereoisomerism में we are going to look at the different complexes or complexes के हिसाब से to see stereoisomerisms. So first of all, we are going to take the square planar complex. Whenever we have square planar complex, then we will take the octahedral and then tetrahedral. No, tetrahedral उसका last में. First one, please write square planar complex. First point regarding square planar complex, please write the square planar complex has plane of symmetry. Therefore, it won't show optical isomerism. Therefore, it won't show optical isomerism. ठीक, I will explain points. Next point, for geometrical isomers, check ligands at 180 degree. What is the meaning of these things? I will explain it to you. But सबसे पहले आना चाहिए कि how to answer things, है ना? So square planar complex has plane of symmetry, therefore it won't show optical isomerism. What is the meaning of plane of symmetry and what type, like, से क्या लेना देना है optical isomerism का? So basically, optical isomerism, if you remember halcyone and halorine, then optical क्या करते हैं? They rotate the plane polarized light into different direction. And whenever we have any kind of symmetry, then in that case, both the compounds are going to be same. There will be optical isomerism वहां पे नहीं होगा. And where, what type of symmetries we are talking about? एक तो plane of symmetry है, and there is one thing that is known as center. Now, how to identify plane of symmetry and how to identify plane of symmetry? So for plane of symmetry and center of symmetry, for plane of symmetry, you, ठीक है? And when you cut something, so for example, if you cut something like this, then whatever you have cut, top and the bottom should be same. If you have cut like this, then whatever is here, this side should be on that side also. If you have cut like this, then whatever is on the right should be on the left. Does it make sense? Plane of symmetry कैसे देखना है? Sorry, is that not? Yes, sir. For example, let us suppose we have the letter A. ठीक है? तो A को अगर हम ऐसे काट दें, like this, then it has a plane of symmetry. Make sense? Yes, sir. But if I have P, then no matter how I cut it, if I cut it this, or if I cut it like this, or if I cut it like this, or if I cut it like this, it does not have any plane of symmetry. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Square planar, as the name suggests, it is a planar molecule. So all of its atoms will be, for example, if I have metal, the ligand here, the other ligand is here, the other ligand is here, the other ligand is here. Okay. Now, so we are now, right now, we are looking at what from the top, है ना?
एंड नीचे आपके पास कॉम्प्लेक्स, आप उसको देख रहे हैं. इफ यू वांट टू लाइक, इफ यू कीप योर हैंड जस्ट ऑन योर आईज, है ना, तो फिर आपको एक इस तरह का दिखेगा कि वी हैव मेटल and there are two ligands which are coming outside if you it, and there are two ligands which are going back. अगर आप ऊपर से देखिएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा. इफ यू सी जस्ट लाइक मेटल को बिल्कुल आंखों के सामने रख के देखना है आपको इन दैट वे, देन two ligands will be coming out and the two ligands will be going in. Make sense? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. अब अगर हम कट करना चालू करें, तो इफ आई कट इट लाइक दिस, then first of all let us suppose this is A, this is A, this is A. There are different ligands A, B कर लो, C कर लो, D कर लो, है ना, make it different. So I cut it like this. So A and D will be getting cut, then will be cut, then B and C will be cut, right? So B and C, all of these five atoms, metal A, B, C, D, all of these is somewhat like spherical in nature, right? आपका ये spherical atom कटा, whatever is above, it is also below, है ना. A के लिए भी spherical होगा, है ना. If you cut it like this, then whatever is above will be below. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. So this is why the square failure complexes, they will be having, this is how they will be having of symmetry, and because there is an element of symmetry they won't show optical isomerism. ठीक है. So case one लिखेंगे हम लोग, but they are going to show geometrical isomers. And how to geometrical isomers, you have to check the ligands at 180 degree. पहली चीज तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, बिकॉज स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स में होता ही नहीं. यू हैव टू रिमेंबर दैट. नाउ केस that we will take and we will analyze is the M with four same ligands. ठीक है. When four same ligands, there is only one configuration possible, and that is when both the A are opposite, है ना. At 180 degree we have A के opposite में क्या है, A है. इस A के opposite में क्या है, A है. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. There is no other configuration, है ना. Yes. So we are going to identify we are going to identify this particular case as A is opposite to A and A is opposite to A. Here it is going to make sense. Case number two, when we have M A3B. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, we have M A3B, then one A will be opposite to B and the two will be opposite to each other. एक A जो है opposite to B है and the two A's are opposite to each other. Is there any other case that we can make? No. No, right? So, अच्छा, by the way, so here also zero geometrical isomer. Yes, sir. Zero geometrical isomer. Case number three. Have M, there are two A's and two B's. Now, in this case, if you see, one time what I can do, I can keep A opposite to A and B opposite to B. Give me one complex. The other complex I can make is A opposite to B and A opposite to B. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Right. So now we can have complex something like this: A opposite to A, B opposite to B, and here A is opposite to B and A is opposite to B. When the same ligands are at 180, है ना, दिख रहा है ना, B and B are at 180, then it is known as trans isomer. When the same ligands are at 90, then it is known as the cis isomer. Is there any other possibility? No. No. So there will be two geometrical isomers. Another case will be case number 4. We have M, 2A, same, and BC. BC are, now what are the cases? Can you tell me?
can have. Um, there's the metal and नहीं नहीं then व्हाट, नहीं नहीं इस तरह से बोलिए, लिगेंड्स के बारे में बताइए. इन वन केस so आई विल if कीप. हाँ बोलिए, ए अपोजिट किसके अपोजिट रख दें, बी को किसके अपोजिट, इस तरह से बताइए. चूज एनी टू, चूज एनी टू. A opposite to A ए and B अपोजिट टू opposite. ए. हाँ, सो नेचुरली बी विल बी अपोजिट टू सी. करेक्ट. Yes, sir. इन दैट वी कैन हैव So A opposite to B and A opposite to C. ए अपोजिट टू बी एंड ए अपोजिट टू सी. C. एनी अदर केस दैट वी कैन हैव. Mm, no. नो राइट. तो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये बना तो लेंगे आप, है ना जाए. You can draw Yes, the, sir. but you can draw the Yes, sir. complex ना इस. हाँ ठीक है. Now last case when we have all four ligands different. Hmm. Tell me what are the different isomers we can from M, A, B, C, D. A opposite to B, C opposite to D. A opposite to B and C opposite to D. That is one. Anything else? A opposite to C, B opposite to A D. opposite to C and B opposite to D. D. Anything else? A opposite to D and B opposite to Very C. good. B opposite to C. So there will be in total T geometry. So you can draw them, right? है ना. Yes, sir. ठीक है, ड्रॉ भी कर लीजिएगा. Let me know once you're done. Done. Next, regarding the tetrahedral complex. You cannot have any other cases ना, M, A, B, C, D चारों different हो गए. Right, tetrahedral complex. Now, in tetrahedral complex, the first point is it does not show geometrical isomerism because relative positions of ligands attached to
central metal atom same with respect to each other. With respect to each other. ठीक है, इसका like why did we have any geometrical isomerism in the square planar but not in tetrahedral? क्यों, क्या रीजन है? तो ध्यान से देखिए. For example, if I have A, B, C, D, and in tetrahedral I will be having M, A, B, C, and D. Now, I will talk about the positions of, let us suppose, I'll talk about the position of A with respect to B, with respect to D, and with respect to C. And I will not be talking about in terms of distance, I will be talking in terms of angles. Because I know, make sense? Yes, sir. So A, B, they are 90 degrees apart. A and D are also 90 degree apart, but A and C is 180 degree apart. Make sense? Yes or no? Yes, sir. But in the case of tetrahedral, A and B, it is 109.5 degrees apart. A and C is also the same. A and D is also the same. Correct? है हाँ या ना? Yes, sir. All the bond angle is going to be 109.5 degrees only. So A से हटा के आप B को रख दें या B से हटा क्या कर रहे थे हम लोग? See, if you see here, what we were doing, instead of B और C को हम लोगों ने exchange किया, then we got this complex. Yes or no? Yes, sir. है ना? So no matter how much, see, अगर आपने B और C को exchange किया ना, for example, if you exchange B, then first B was at 90 degree. Now in this case, B will be at 180 degree. हाँ या ना? Yes. Make sense? But that is not happen in this tetrahedral case. That is why it does not show any geometrical isomers. Make sense, Zaino? Yes, sir. अब नेक्स्ट चीज जो आपको बस याद कर लेना है, and this is also we saw in haloic and halorine tetrahedral complex shows optical isomerism only when all four ligands attached to central metal atom are different. And we have also seen this case in alkyl halorenes. If a carbon atom it has four different groups attached to it, then it is going to show optical isomers, right? Yes, याद है ना? Yes, sir. है ना? And those optical isomers are known as enantiomers. So we have M, A, B, C, D. A, B, C, and D. Right? M, A, B, C, D has two optical isomers, and these are aka enantiomers.
Okay, Zaina, you're done. Right, next the octahedral complex. Third case. In octahedral complex, पहली चीज तो ना हम लोग को ये देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होगी। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको समझ में आएगा कि आप काट दें तो आपको दोनों साइड क्या सेम चीजें मिलनी चाहिए, देन वी से दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। So if you cut it on either side, you will be getting the same thing. That is plane of symmetry. Center of symmetry का मतलब क्या हो? For example, if you have, let us suppose the letter A ही देख लेते हैं. We saw that A has a plane of symmetry, center of symmetry. See, the center of symmetry में क्या है? You take the center of this particular object and you move down, and then you move the distance up. Did we get the same thing? Basically, I'm asking. If I went up, got a like I got a line, a vertex, or I got a vertex, right? Yes, sir. What about below? Did I get a vertex? No. No, right? अच्छा, if I take a square, let us suppose. नहीं, या फिर एक लेटर ले लेते हैं. For example, we have letter Z. ठीक है? Let us see if it has center of symmetry or not. I took the center and I went on the top. I got an edge. Here also I got edge. I go I go top right. Top right. Top right. Opposite will be bottom left. Same thing, yes or no, please tell me. Yes, sir. So this has a center of symmetry. Make sense? Yes, sir. ठीक है, दैट इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री. आपको समझ में आ जाएगा कब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा. नाउ what about the plane of symmetry when we will be having plane of symmetry? So first thing is that I will show you how also. If two same ligands are at 180 degree, then plane of symmetry exists. Then plane of symmetry exists, and therefore जब भी सिमेट्री आ जाएगा तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा. ऑप्टिकल आइसोमर्स will not exist.
कैसे सर? हाउ? सी, मेटल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में टू सेम लिगेंड एट 180 डिग्री. तो लेट अस सपोज एंड ए, बाकी सॉरी ए एंड ए, टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री. बाकी सारे अलग कर देते हैं ना, बी सी डी एंड ई. मेक सेंस? ये प्लीज टेल मी. यस सर. अब देखिए बी सी डी ई जो है ये सारे सारे एक प्लेन में ही है. करेक्ट? यस और नो? कीप योर माइक ऑन प्लीज, आई नीड सम क्विक आंसर्स. ठीक है जायना? यस द सर. बी सी डी ई दे आर इन द सेम प्लेन, है ना? हाँ है ना? राइट, बी सी डी ई दे आर इन द सेम प्लेन, राइट जायना? यस सर. So when I start cutting, I will cut E and D. Then I will move on. I will cut the metal, है ना? और आगे बढ़ेंगे तो फिर बी सी, yes or no? काटते चले जाएगा यस. हम. मेक सेंस? ठीक. यस. तो when the E is cut, E के मतलब E will be a circle, D will be a circle, C will be a circle, B will be a circle, M will be a circle. तो दो सर्कल मतलब जिसको काट रहे हैं उसके ऊपर नीचे तो सेम चीज होगी, yes or no? इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा स्क्वायर प्लेनर में, राइट? If I am cutting यस. E, then above E will be half of E, below E will be half of E only. Make sense? यस सर. The rest we see that above we have A, below also we have, ऊपर भी A और नीचे भी. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, यस और नो? यस सर. ठीक है चलिए. दूसरा, तो जब भी आपके पास दो सेम लिगेंड आ जाए 180 पे, देन द प्लेन ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट. अनदर वन, इट इज स्लाइटली नॉट वेरी कन्वेंशनल टू सी, बट फिर भी हम आपको ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का ना. ठीक है प्लीज राइट. इफ टू सेम पेयर ऑफ ligands are opposite to each other, then plane of symmetry exists and optical isomer will not exist. ठीक है? कैसे? टू सेम पेयर ऑफ लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, यहां पे अलग कर देते सी और डी. तो सेम पेयर ऑफ लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर, यस और नो? यस सर. है ना? अब देखिए जरा, अब अगर हम बीच से काट दें इसको इस तरह से, if I cut it like this, then C कटा, M कटा, D कटा, तो जो कटता है उसको देखने की जरूरत नहीं है. ऑन दिस साइड आई हैव ए, ऑन दैट साइड आल्सो आई हैव ए, और फिर आगे की तरफ बी है, इधर भी आगे की तरफ बी. मेक सेंस? यस और नो? यस सर. These are the cases in which you will be having the symmetries, है ना? अब हम लोग केस देखते हैं अलग अलग. Are you done writing? यस सर. So first we have complex symmetry, if there is any symmetry. Geometrical isomer, optical isomer, how many enantiomeric pairs will be there, and total how many stereoisomers will be there. ठीक है? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. इसमें तो नंबर्स ही आएंगे सिर्फ ना. यहाँ पे सिमेट्री को थोड़ा सा कम ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा हो सकता है. So, सी
First of all, we will be having metal surrounding 6 ligands which are all same. तो अब इस केस में देखिए, आई होप यू कैन सी दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस और नो? ए ए ए ए ए एंड ए, इफ यू गो दैट साइड ए, उसके उल्टा भी ए, ऊपर भी ए, नीचे भी ए, मेक सेंस, यस और नो प्लीज टेल मी? Yes, sir. And all two same ligands are opposite to each other. A is opposite to A, so there will be plane of symmetry also. So in this case, we have center of symmetry as well as plane of symmetry. Now on the हाँ, geometrical isomer के लिए वही हम लोगों को चेक करना पड़ेगा that check the ligands at 180 degree. So we cannot do any exchange ना, एक exchange में A ही आ रहा है, एक exchange में B आता तो कोई बात होती, right? But in this case, we will not have any geometrical isomers also. So zero GI, zero optical isomers, zero enantiomeric pair, and zero stereoisomers. Make sense, yes or no? Yes, sir. Next is M, A5B. Now, if I draw this complex, no matter how I draw it, A opposite to B will be always there, and there will be at least two A's which are opposite to each other. So two same ligands opposite to each other at 180 degree. Makes sense, yes or no? So there will be a plane of symmetry. Makes sense, Zaina? Yes, sir. There will be a plane of symmetry. Also, B को अगर हम किसी से भी exchange करें ना, then it like B will be always opposite to one A only. इसमें like there will be no other geometrical isomer possible. In this case, A will be opposite to B, the other two A's will be opposite to each other. इसके अलावा कोई और केस बन नहीं सकता, if you see. सही है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, आ रहा ना समझ में, हाँ या ना? हाँ, sir. आ रहा है, ठीक है. So geometrical isomers will also be zero, optical zero, enantiomeric pair zero, and stereoisomers zero. Now, if I have M A4B2, ठीक है. अब इसके सारे कहते हैं हम लोग, है ना? Let us see the cases in M A4B2. M A4B2 में आपके पास one we can do is A opposite to A opposite to A, B opposite to B. This is one case. Can we have any other case? No. हो सकता है ना, A opposite to B कर सकते हैं हम लोग. A opposite to B नहीं आया ना? We can do ना A Yes, opposite to B, another A we'll opposite get to B, opposite to and B. opposite to A. नहीं B, एक सेकंड, व्हाट जाए ना, सॉरी. नहीं, यही sir. We'll get two A opposite to B and one A हाँ opposite to B. हाँ सही है ना? ठीक है. तो इन दिस केस टेल मी whether there will be any plane of symmetry. पहले वाले केस में is there any two same 180 है ऐसा? Yes, sir. है ना? And what about here? Two same ligands at 180, ऐसा केस हो रहा है यहाँ पे? Mm, देखिए A is opposite to A, one. है ना? So this will also have plane of symmetry. So in like there are two geometrical isomers in this case, and both the geometrical isomers are having symmetry, right? There are two geometrical isomers, no optical isomer because there is a plane of symmetry, no enantiomeric pair, and how many stereoisomers? Two stereoisomers, and those two stereoisomers are both geometrical isomers. Make sense, yes or no? Yes, sir. Next case is M. A को 4 ही रहने देते हैं, and two different ligand B and C. ठीक है? तो आई थिंक दिस विल बी द केस. इसके अलावा कुछ और बनेगा तो बताइए, देखिए जरा. Will there be any other case? Okay, so no. No, right? ठीक है. Now, I hope you can see that both of these are going to have A opposite to A है, यहाँ पे भी A opposite to A है. So both of these will be plane of symmetry and plane of symmetry, है ना? So plane of Yes. symmetry will be there.
two geometrical isomers. Optical isomer will be 0 and isometric pair is 0. 2 3. Next is M A3B3. M A3B3 में we can have A opposite to A. Now, 1A will be opposite to B and then B opposite to B. Make sense, yes or no? Yes. और एक केस बन जाएगा A opposite to B, A opposite to B and A opposite to B. Try to think of any other case. Mm, no. Okay, fine. No. And in this case, the first case, A is opposite to A, so there will be plane of symmetry. Now, in this case, where there will be, whether will we be having a plane of symmetry? Whether there will be any plane of symmetry in this case, the second one. ना In apparently नहीं this लगता है. हाँ जी जी बताइए. in this case, there will not be plane of symmetry. हाँ हाँ apparently it looks like that, but देखिए जो second हमारा criteria ना, two same pair of ligands are opposite to each other. AB है ना, AB Okay, okay, है ना, so that's why there okay. will be a Yes, plane of because symmetry, right? तो दोनों में plane of symmetry होगा. So both of these geometrical isomers are having plane of symmetry. There are two geometrical isomers, 0, 0, and there will be two stereo isomers. Now, this is the last case. I think हाँ ये वाला case जो है ना MA3B2. एक B C करना है सिर्फ, है ना. So I think here also plane of symmetry is still going to exist because of AA and AB. Correct? yes. Now we have M, A3, B, C and D. तो अब इस केस में देखिए जरा, when we have B, C and D, तो ये कर देते हैं. And in this case there will be B, C, D कुछ इस तरह से कर देते हैं. Make sense, yes or no? Can we have, अच्छा एक सेकंड, M A3B2C में एक और बन जाता ना. Let me show you. Forgot. A3B2C, A, B and B C. ठीक है, उसके बाद A B and A C. A3B2C. So there's D also, no? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. इसमें एक और बनेगा. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. और बन जाएगा. विल बी हैविंग ए बी हो गया, बी सी भी हो गया. यू कैन हैव ए सी, ठीक है, एंड बी बी एंड ए है ना. देखिए जरा, Yes, sir. करेक्ट, ये सुनो ना. इन दिस ऑल्सो विल बी हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री बिकॉज टू सेम है ना, ए इज अपोजिट टू ए. यहाँ पे बस 3 करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट. How will there be three though? Because this is A to C and B B A A. They're not the same. 1 2 3 में कौन सा दो सेम लग रहा है आपको? नहीं, आपने जो थर्ड लिखा A हम्म opposite to C, B opposite to B and A opposite to A. हम्म इसमें कुछ सेम नहीं है. है ना सेम. ए अपोजिट टू ए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना.
सेम नहीं है क्या मतलब, समझे नहीं जरा, व्हाट आर यू आस्किंग? नहीं, I got confused पिछले क्वेश्चन के साथ. अच्छा अच्छा, नहीं अभी ठीक है, फाइन नाउ, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड? No, I got it. यू गॉट इट, ओके। चलिए नेक्स्ट वन इज, by the way let me mark M A4 B2 also because these are important case सवाल आते हैं। then we have M, I mean NCERT has discussed only these, है ना, उन्होंने ज्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं है। MA3 B2, क्या MA3 BCD। चलिए इसमें जरा हमको हेल्प कीजिए, क्या क्या बनेगा। तो ए लिंकेज कर देते हैं, उसके बाद फिर देख लेते हैं ना। देयर विल बी वन ए लिंकेज, देयर विल बी देन ए बी लिंकेज, और उसके बाद क्या बचा, सी डी। एक और कर लेते हैं ए लिंकेज, ए सी लिंकेज, और क्या बचा, बी डी, है ना। ए लिंकेज, देन ए डी लिंकेज, एंड क्या बचा बी सी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. एंड देन वी कैन हैव ए बी, ए एंड ए डी। इसके अलावा और कोई दिख रहा है क्या? No. ओके, you can see that the first three is going to have plane of symmetry, right? Yes, sir. The last one is not going to have plane of symmetry, है ना। Yes. जो दो कंडीशन है दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो दिस पर्टिकुलर आइसोमर हैव वन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। और ये मान लेते हैं आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5। तो देर आर इन टोटल 5 आइसोमर्स, है ना। तो अगर हम पूछे 1 and 2, तो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, या फिर ऐसे हम बात करते हैं 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 एंड कैसे कैसे बता दे भाई, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 1 and 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 and 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 3 and 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसी तरह से बट 4 and 5 आइसोमर, है ना। उसी तरह से 1 and 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 1 and सॉरी 2 and 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो जो रिलेशन 4 का बाकी सबसे, वही रिलेशन 5 का ही बाकी सबसे होगा, बट 4 and 5 दे आर गोइंग टू बी ऑप्टिकल आइसोमर। याद रहेगा ऐसे, समझ में आ रही बात, Yes, sir. है ना। एंड 4 and 5 विल ऑल्सो बी नोन एज इनैंशियोमेरिक पेयर्स। 4 और 5 एक पेयर हो गए, दैट इज इनैंशियोमेरिक पेयर। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? देयर आर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो 4 and 5 आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। तो दो ऑप्टिकल आइसोमर, एक आइसोमर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बस समझ में आ रही Yes, sir. है ना। इफ आई एम आस्किंग हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू, देन एक्सपेक्टेड है कि आप कम से कम दो हो, राइट। Yes, sir. तो उसी तरह आइसोमर है मतलब एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, अकेला एक कैसे आइसोमर हो सकता है, फाइन। नाउ हाउ मेनी Yes, sir. एनान्टोमेरिक पेयर्स? तो एनान्टोमर्स हमारे पास एक पेयर है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 1 2 3 4 and 5 कितने हो गए? 5। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, चलिए। So for symmetry, we should just write plane of symmetry. नो नो नो, कुछ नहीं लिखना है आपको, ऐसे छोड़ दीजिएगा। मतलब इस केस में आपके एक ऐसा आइसोमर आएगा ना, देखिए जितने एनान्टोमेरिक पेयर आ रहे हैं ना, दैट मींस लाइक 4 there will be one which is not having a plane of symmetry। ये आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। Yeah. Yes. कैन आई मूव ऑन? So is this the last example? हाँ नहीं, अभी और है, लेकिन हम अभी जो एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं ना, उसी एग्जाम्पल को डिटेल में लेंगे। बाकी सारे एग्जाम्पल का बस आप को कंफ्यूजन हम लिखा देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ MA4 B2 इन द डिटेल ऑफ MA3 B3, ठीक है। उसके बाद ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स विद बाइडेंटेड लिगेंड्स के आपके पास दो एग्जाम्पल है, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो बस एक सोचने का तरीका दैट आई वांट टू गिव यू।
सो दैट कुछ नया सवाल आ जाए तो आप इस तर्ज पे सोच सकें, ठीक है। वरना जनरल सवाल आते हैं तो वो तो एग्जैक्टली जो लिखाया हुआ रहेगा ना, अभी लिखाने जो वाले उसी से आएगा, ठीक है ना। Yes. डू यू हैव टू गो समवेयर? 1 minute, I'm writing. यू आर राइटिंग ना, ठीक राइटिंग। Uh, डन। हाँ, सो नेक्स्ट केस इज सी डी हो गया। नेक्स्ट केस देखिए। सो एम ए टू बी टू सी टू, ए अपोजिट टू ए, बी अपोजिट टू बी, सी अपोजिट टू सी। और केस बताइए। यस है A ना। to B, A ए opposite अपोजिट to टू बी, B, B एंड opposite देन to C, बी अपोजिट टू सी, A opposite to C. ए अपोजिट टू सी। हाँ, दीज टू आर डिफरेंट। व्हाट एल्स? और बताइए। Mm. That's it. दैट्स इट। और हो सकता है, देखिए चलिए, इसको हम ना नीचे रखते हैं, ठीक है। ए अपोजिट टू ए ही रखते हैं। ए अपोजिट टू सी, बी अपोजिट टू सी, मेक सेंस? क्या ख्याल Okay, yeah. है ना। बी और बी को साथ में रखते हैं, ए टू सी, ए अपोजिट टू सी, है ना। उसी तरह से सी और सी को साथ में रखते हैं, ए अपोजिट टू बी एंड ए अपोजिट टू बी। ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट, राइट? Yes, sir. है ना। अब टोटल कितने बन जाएंगे इसमें? देयर विल बी 5, ठीक है। नाउ लेट अस चेक इफ देयर इज एनी, तो इसके अंदर पीओएस होगा, इधर भी पीओएस होगा, इसके अंदर भी पीओएस होगा। I think this one will also going to have POS because C is opposite to C, two same ligands opposite to each other. And this case में there is nothing like that. The two cases, I mean both the cases are uh,
नॉट प्रेजेंट, दोनों में से कोई सा भी केस नहीं हो रहा है इसमें, ए अपोजिट टू बी डिफरेंट, बी इज अपोजिट टू सी, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट. सो दिस वन इट विल बी हैविंग अ ऑप्टिकल आइसोमर. इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा विच विल बी मिरर इमेज ऑफ दिस वन. वी हैव इन टोटल 1 2 3 4 5. 5 are geometrical isomer, the sixth one is optical isomer of the fifth one. ठीक है. So the total number of optical isomers is 5 and 6 are optical isomer of each other. So there are two optical isomer. There is one enantiomeric pair and the total number of stereoisomers is equal to 6. Make sense? Yes, sir. चलिए, अब इसके आगे वाले का I will not fry your brain. हम सिर्फ लिखा दे रहे हैं, है ना. मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से आएगा नहीं, ही तक इतना भी नहीं आता है. If you have M, A2, B2, C, D, and in this case there will be 6, there will be 4. 4 है तो दो आइसोमर and there will be total of 8. ठीक है. नेक्स्ट लिखिएगा M, A2, B, C, D, E. In this case you will be having 9 and there will be 12 of optical isomers. मतलब जो 9 थे ना उसमें से 6 जो है they are going to show. तो 6 दूनी 12 है. 6 enantiomeric pairs will be there and 9 6 15 हो जाएगा इसमें optical isomer. And the last one is M, A, B, C, D, E and F. Now, when we have 6 different ligands, there will be 15 geometrical isomers. All of these 15 geometrical isomers will show optical isomer, making 30 optical isomers. And 30 optical isomers मतलब 15 pair हो जाएंगे. And there will be 30 stereoisomers in total. बढ़े आगे. Write this down. Yes. Let me know once you're done. अच्छा, you're done writing. Can I move on? Yes, sir. ठीक. चलिए, दो केस हम लोग को पढ़ना है. केस ऑफ MA4 B2. तो इस केस में there is one case in which we'll be having A is opposite to A is opposite to A and B is opposite to B. तो इस केस में आपके पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स आएगा. मेटल A opposite to A opposite to A, है ना. A is opposite to A is opposite to A and this B is opposite to B. Now since same ligands are opposite to each other, इस केस में इसको बोलते हैं ट्रांस. This is the trans isomer and the other case is when we have A opposite to B, A opposite to B, A opposite to B. So in this case, A opposite to B, A opposite to B, and A opposite to B. So in this case, no two same ligands are opposite to each other, है ना. तो B के सामने B ही है, तो इस वजह से this is known as cis. ना ट्रांस में सेम लिगेंड एट 180 डिग्री होगा एंड सिस में सेम लिगेंड एट 90 डिग्री होगा. ठीक है. सो यू कैन सी B is opposite to B 90 degree में. Now all same ligands will be like at 180 degree, sorry 90 degree only. ठीक है. यहाँ पे A हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा ना. B के हिसाब से देखिएगा. ठीक है. B के हिसाब से यहाँ पे देखना है आपको. इसमें 3B कहाँ से आ गया लेकिन यार, एक से जरा. दिस विल बी A ओनली ना. इसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज. A will be opposite to A, एक में तो होगा. Okay, there is B2, sorry my bad. बढ़े आगे. Yes, sir. Next is case of MA3B3.
The first case is M is A is opposite to B, A is opposite to B, A is opposite to B. देखिए इसमें ना दो तरीके से बनता है. A is opposite to B, A is opposite to B, A is opposite to B. है ना? If you look at this one and a supposedly very different looking one, तो देखने में बस अलग है, but it is going to be same only. Same ही होगी. क्या है? It is going to be like this. A opposite to B, A opposite to B, and A opposite to B. If you look at these two complexes, it will seem very different, है ना? B B B एक साथ यहाँ पे A यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है here. Yes or no? Right है ना? Apparently those both of these are going to look very different, है ना? दोनों डिफरेंट लग रहे हैं जायना, ये दोनों सेम लग रहे हैं. Mm, they are different because the position is not the same. I mean actually they are same only, they are not different. Because दोनों के केस में अगर आप देखें ना तो A is opposite to B, है ना? इन पोजिशन आपको लग रहा है, आई मीन इट इज ओनली अ थिंग ऑफ रोटेशन, आई वुड से. रोटेट करेंगे तो आपको तो वो, है ना? दे आर सेम थिंग, बट अगर रोटेट करके देखेंगे ना तो फिर आपको दिख जाएगा. तो शो करने का तरीका हम ऐसे बता सकते हैं आपको. आई हैव टू शो यू द ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना? ऑक्टाहेड्रल शेप, बट आई डू Are नॉट they गेट. considered the same even though they are being rotated? मतलब अगर आप अपने पेन को रोटेट कर देंगे तो पेन नहीं आएगा ना. बात But समझ में आ रही है? टेल मी. नहीं नहीं सेम ही है. सेम ऐसे नहीं दिखेगा आपको. लेट मी, आई विल ट्राई शोइंग यू द ऑक्टाहेड्रल शेप. जस्ट गिव मी अ सेकंड. कैन यू सी द स्क्रीन? Yes sir. देखिए एक तरीका तो ये है, जैसे हम लोग इस तरह से देखते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप को, राइट? Yes sir. सही है. अब थोड़ा सा हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं इसका. I want to see it in a different way, like this. देखिए एक तो ये वाला ओरिएंटेशन है जहां पे चार एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे. फोर इन द सेम प्लेन, वन अबव एंड वन बिलो. मेक सेंस? यस और नो? Yes sir. और एक ओरिएंटेशन है ये वाला, इसमें देर आर थ्री लिगेंड्स कमिंग टुवर्ड्स यू एंड थ्री लिगेंड्स गोइंग बिहाइंड. कैन यू सी दैट? Yes sir. ठीक है. अब लेट मी सी इफ आई कैन चेंज कलर्स और विथ पर्सन. this. ठीक. अब देखिए जरा. लेट मी ट्राई शोइंग दिस हियर. बी बी बी. ठीक है. ए ए एंड ए. Okay. सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? Yes sir. नो प्रॉब्लम ना. नाउ कैन यू जस्ट
होल्ड दीज, याद रहेगा आपको ये तीनों ए, ये तीनों यस ए सर। याद रहेगा पक्का? आई एम हाँ। इरेजिंग देम, ठीक है ना? ध्यान से यस। देखिएगा आप। 3A, यू विल रिमेंबर द 3A ना? हाँ सर। चलिए सर में वो रोटेट करेंगे तो हम वो हो जाएगा। 3A याद है पक्का? आई एम रोटेटिंग यस इट सर। नाउ। ओके। जो यही था, यस सर। बी, बी एंड बी। सो दिस इज द फर्स्ट आइसोमर। अगर आपने कॉपी में बनाया है, कॉपी में बनाया है आपने आइसोमर, भी नहीं बनाया है? नहीं बनाया। ये पहला वाला हो गया, देखो, देख लीजिए एक बार। यस सर। लेट मी वेट, है ना, ये पहला वाला पहला वाला। है ना? राइट नाउ आई विल शो इन द स्क्रीन ऑल्सो नाउ, है ना? अब ये देखिएगा। अरे ये कहाँ चला गया यार, एनोटेशन कहाँ चले गए? ये यहाँ पे ए लिखा था ना, ए, ए, ए एंड बी, बी, बी। सही है। यस सर। अब इसी चीज को जब हमने रोटेट किया, है ना, आई होप नाउ नाउ यू विल रिमेम्बर इजिली द ए, से थोड़ा प्रैक्टिस हो गया आपको। अब इस केस में अगर हम ए लिखें, देन इट विल सी दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज बी, राइट? यस और नो? यस सर। सेम ही है ना, बस रोटेट ही किया है हमने। जो ए था दिस इज अभी, द वो जो पहले। हाँ, फर्स्ट पोजीशन। व्हाट, व्हाट्स है ना? दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, इसको आपने आइसोमर के लिए रोटेट किया था तो वी गॉट द अदर नहीं, अच्छा आइसोमर। पोजीशन, एक सेकंड, एक सेकंड। फर्स्ट आइसोमर सेकंड आइसोमर बात करते हैं ना, हैव यू रिटन द फर्स्ट आइसोमर एंड सेकंड आइसोमर इन योर नोटबुक? नहीं लिखा अभी शायद यस। ना आपने, लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। ओके, तो दिस इज द सेकंड आइसोमर, राइट? ये तो चला यस गया सर। यार। अभी जो हमने देखा था वो सेकंड आइसोमर था, राइट? बस यस सर। ए, 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 आई मीन ए क्या मतलब जगह पे बी आ सकता है, बी की जगह में ए आ सकता है ना। आई एम नॉट टू मच कंसिडरिंग दो थिंग्स। यहाँ पे बी की जगह ए हो सकता है, राइट? सारे ए की जगह बी और सारे बी की जगह ए। मेक सेंस, ये सुनो, अभी बात समझ में ना? शायद अरे यस समझ सर। आना, ठीक है। अब इसको रोटेट करते तो पहला आइसोमर मिल जाना चाहिए हमको, है ना? आई एम नॉट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड्स, दैट आई वांट टू टेल यू, कि हम बॉन्ड्स नहीं ब्रेक कर रहे हैं, हम सिर्फ रोटेट कर रहे हैं। एंड रोटेशन से कोई चीज चेंज नहीं होगी, राइट? सो इफ आई यस सर। रोटेट इट लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट आइसोमर नाउ। ए, 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 बी, बी, बी। ये याद है ना, ये तीन एक साइड जा रहे हैं, ये बी तीन एक साइड ऊपर जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ या ना? ये तो दिख रहा होगा अब। कैन यू सी दैट दीज ए आर गोइंग डाउन, दीज बी आर गोइंग अप? हाँ या ना? यस सर। सेम है ना दोनों? यस सर। चलिए ठीक। बाय द वे, नाउ both of these they are known as facial isomer और पैक आइसोमर। पहचानने का क्या तरीका होगा? नो सेम लिगेंड एट 180, नो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, है ना? अदरवाइज मतलब कैसे पहचानेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? देयर विल बी नो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री। अदर केसेस एम, व्हेन वी हैव ए, बी, बी एंड ए, बी। इस केस में ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी एंड ए के अपोजिट ए, दूसरा बी। So this is known as the meridional isomer. मेरिडोनियल ना, हाँ।
या फिर मर। ठीक है, मर आइसोमर। इसमें क्या होगा, सेम लिगेंड्स एट 180। बट याद रहे ना, दिस केस इज ओनली फॉर Ma3B3, है ना, एट 180 डिग्री। पैक और मर वाला केस कहाँ पे, 180 डिग्री, सॉरी, A3B3 वाले। Let me know once you're done. डन सर। This will be right. Next, this one is also important. सवाल यहीं से कहीं से आएगा ना, ट्रांस और सिस और पैक और मर, and then octahedral complex with bidentate ligand. इसमें केस ए जो आपको पढ़ना है, केस नंबर 1, इट इज MA, है ना। MA3 मतलब देयर आर 3 bidentate ligands। इसमें जनरली आपके पास केस आएगा मेटल which is having EN whole thrice, या फिर मेटल which is having oxalate whole thrice, है ना। Ethylene diamine and oxalate, both of these are bidentate ligands. So in this case, you have no geometrical isomer, only there is 2 optical isomers. How it is going to look like, please see. We have metal. Metal के इसमें आपके पास in octahedral complex, you will be having 4 in the same plane. So एक, I will make it like this. ठीक है। Now let us suppose the A, it is bonded like this because bidentate है ना, तो एक A से 2 बॉन्ड आ रहे होंगे। And once again here also from यहाँ से एक A इस तरीके से, and then इस तरीके से। Does this make sense, जाइना? ये समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? यस सर। Yes, जाइना? यस सर। Okay, fine. Now the mirror image of this particular complex is going to be an enantiomer, एक optical isomer होगा, because they will be non-superimposable on each other. Also, this thing, it does not have any plane of symmetry or center of symmetry. So this will be the mirror image, correct? And this will be a optical. Both of these are going to be enantiomers. तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिख लेना है, जो कि याद करने वाली चीज है। This case will have no geometrical isomer and 2 optical isomers, that is 1 enantiomeric pair. So the enantiomeric pair depends on the optical isomer.
हाँ, दो ऑप्टिकल आइसोमर है तो एक पेयर हो जाएगा। यस सर। बढ़े आगे। डन। डन। केस टू। इन दोनों केसेस को तो बिल्कुल एग्जाम से पहले एकदम याद, मतलब दोबारा एक दो बार चले जाइएगा, ठीक है। केस टू, यस व्हेन यू हैव मेटल, देयर आर टू बाइडेंटेट लिगेंड एंड देयर आर टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। तो इस केस में वन विल बी दिस केस, नो? सही है, हाँ या ना? यस सर। और एक इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा जो कि विल बी द मिरर इमेज है। सही है। यस सर। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स विल आल्सो शो अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे? लेट मी शो यू। मेटल अब इस टाइम going to keep the monodentate ligands, that is A, opposite to each other, इस तरीके से, and these ligands which are the bidentate will be opposite to each other like this. है ना? As you can see, there are two same ligands opposite to each other. So this will have a plane of symmetry. Therefore, no optical isomer. ठीक है? But both of these are going to have both of these are optical isomers and these are enantiomers to each other. Now, if I write the conclusion about this particular case of Ma to A2, in this case we'll be having there are two geometrical isomers, right? इनमें से अगर हम मान लेते हैं 1, 2 and 3, 1 and 2 are optical isomer, 1 and 3 is geometrical isomer, 2 is also same geometrical isomer, ठीक है। तो यहाँ पे geometrical isomers के टोटल कितने? There are two geometrical isomers. If I talk about optical isomers, there are two optical isomers. And how many enantiomeric pairs? There will be one pair. The total stereoisomer, as you can see, 1, 2 and 3, this is going to be 3. Two geometrical isomer नहीं, there are only optical isomers. Then writing. नो सर। Okay.